A O B C and D. Here you see 42 degree. Question 9, exercise 13. Students, here you see angle AOC equal to angle BOD. आप जो यहाँ देख रहे हैं एंगल AOC, here you see angle AOC equal to angle BOD from vertically opposite angle. From vertically opposite angle. If given angle AOC equal to 42 degree, so angle BOD is also 42 degree. Now you come again, you say angle BOC is equal to angle BOC equal to angle AOD. It is also equal from vertically opposite एंगल. यहाँ जो हम देख रहे हैं ये एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों ही वर्टिकली एंगल है और ये दोनों ही इक्वल होगा. If angle AOC equal to 42 degree, so angle BOD is also 42 degree. Student, here you see angle. You take line, straight line COD. COD is straight line. COD is a straight line. So you write COD is a straight line. So you write angle AOC equal to angle AOC प्लस एंगल AOC आप यहाँ देख रहे हैं कि COD जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो है ये दो एंगल जो बन रहा है वो LP से बन रहा है, लीनियर पेयर. एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम LP linear pair. Here you see student value of angle AOC 42 degree. Find value of angle AOD. So angle AOD equal to 180 degree minus 42 degree. Angle AOD equal to 138 degree. But here you see students, angle AOC equal to angle BOD and angle BOC equal to angle AOD. So here the value of AOD equal to 138. So you write angle AOC angle BOD is 42 degree because they are equal from vertically opposite angle. Again angle BOC and angle AOD. So here you see angle AOD equal to 138 degree
एंड एवब यू सो, आप ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल BOC जो है वो एंगल AOD का इक्वल है फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल BOC इक्वल टू 138 डिग्री. In your question, first find the value of angle AOD. So here you see value of angle AOD. Next, value of BOD. So here you see value of BOD and value of COB. COB means BOC. COB means BOC. So here you see, find the value. You write BOC is also angle COB. आप BOC को COB भी लिख सकते हैं. So here a student, first you write angle AOC equal to angle BOD from vertically opposite angle, and next angle AOD equal to angle BOC, or it is also write COB. You also write COB. They are also vertically opposite angle, and here you see angle here you see COD is a straight line. तो जब भी ये स्ट्रेट लाइन होता है तो उसे वो लीनियर पेयर में आ जाएगा, और लीनियर पेयर जो है वो 180 डिग्री का होगा. सो हियर यू राइट एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम LP लीनियर पेयर. Write the value of angle AOC. So the value of angle AOC is given 42 degree. So you write here 42 degree plus angle AOD equal to 180 degree. Find the value of angle AOD. So you write angle AOD equal to 180 minus 42 degree. So here you find the value of angle AOD. And above proof, angle AOD equal to angle BOC. So the value of BOC is also 138 degree. You write angle BOC और एंगल COB. आप एंगल BOC और COB ये दोनों नाम लिख सकते हैं. Come next question 10. Next question 10. You have a figure R O S P Q. Here you see the given value of angle POS 114 degree. 114 degree in given value of POS in your question.
So here you write first angle POS, angle POS equal to angle POS equal to angle ROQ. ROQ from vertically opposite एंगल, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। तो POS, एंगल POS इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंगल POS इक्वल टू 114. So here you write 114, the value of angle POS and value of angle ROQ are equal. Next here you see ROP. Here you also write angle POR equal to angle QOS equal from vertically opposite एंगल। आप यहाँ जो POS देख रहे हैं और ROQ देख रहे हैं, ये दोनों ही एंगल वर्टिकली एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा और एंगल ROP and SOQ are also equal from vertically opposite angle. Now you write ROS is a straight line. आप यहाँ देख रहे हैं कि ROS जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल POR प्लस एंगल POS equal to 180 degree. LP from linear pair. The value of POR is not given, but the value of POS is given 114 degree. So here you write 114 degree equal to 180 degree. Now find value of POR. So POR equal to 180 degree minus 114 degree. So angle POR equal to 66 degree. Okay, but here you above write, आपने ऊपर में पहले ही वर्टिकल अपोजिट एंगल को दिखाया है कि ये इक्वल होता है। सो राइट देयर वैल्यू एंगल POS, एंगल ROS, एंगल POR and angle QOS. So the value of POS equal to 114 degree. Next value of ROQ. So the value of POS equal to the value of angle ROQ. So you write here 114 degree and here you find the value of angle POR 66 degree and above proof angle POR equal to angle QOS from vertically opposite angle. So the value of angle QOS is also 66 degree. Okay.
come last and 11 number. Your 11 number question. C O D A B. But here you see the value of angle AOB is given 56 degree. So here you write the value of angle AOB equal to 56 degree. Again, given question angle BOC equal to 100 degree. So here you see angle BOC. So here you write 100 degree. The value of angle BOC equal to 100 degree. Again in given question, value of angle DOA is 74 degree given, and value of angle COD equal to x degree. So here you write x degree. So first student, you write given, here you see given angle AOB equal to 56 degree, angle BOC equal to 100 degree, angle COD equal to x degree, and angle DOA equal to 74 degree. So here you see you have two straight lines. So you write the sum of all angles around a point is 360 degree. You write the sum of all angles around a point is 360 degree. The sum of जितना भी एंगल है सभी एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होगा. ओके, द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, एंड राइट द नेम ऑफ एंगल. यू हैव एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस angle DOA. You have four angles, 1, 2, 3 and 4. Their sum is 360 degree. Write the value of angle AOB 56 degree. Again value of BOC 100 degree. Again value of COD equal to x degree, and value of DOA equal to 74 degree, equal to 360 degree. So first you add number 230 plus x equal to 360 degree. So value of x equal to 360 degree minus 230 degree. X equal to 130 degree. So hence
एंगल COD इक्वल टू 130 डिग्री। ओके